Hello guys, my name is Vinitha and I am from IIT Delhi. Today we are going to cover the topic postulates of quantum mechanics. It is a very important topic and ये टॉपिक आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बड़े टॉपिक्स है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए. लाइक ये पोस्टलेट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. इनका क्या यूज़ है, कहाँ पे कैसे यूज़ हुए हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इन पोस्टलेट्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि पोस्टलेट्स कहना क्या चाहते हैं, तब आप वो समझो. आज हम 5 पोस्टलेट्स पढ़ने वाले हैं. दैट इज बेस. पोस्टलेट्स काफ़ी इजी है बट इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल पोस्टलेट्स हैं. एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ें तो मैं भी आपको समझाऊँ. हमारा जो पोस्टलेट 1 है दैट इज द वेव फंक्शन. ये क्या कहता है कि द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कंप्लीटली specified by the function r psi. There should be psi that depends on the coordinate of the particle and the time t. So this function is also called the wave function or the state function that has the property that this term denotes the probability of the particle lying in the volume d tau at the time t and located at a distance r. क्या कहना चाहता है कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टिकल को हम कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं किसी एक वेव फंक्शन साई के फॉर्म में, जो कि टाइम टी और उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है. और उसको हम क्या कहते हैं, उसका वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन. उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो ये टर्म है साई स्टार इनटू साई डी टाउ, वो प्रोबेबिलिटी देता है उस पार्टिकल की डी टाउ वॉल्यूम के अंदर होने की उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे. सो कैन आई से दैट what will be the value of this term over whole space? If I will integrate this term over whole space, what will the value? The value will be 1. Why? Because I know the probability of finding the particle in d tau. तो अगर मैं सभी d tau एलिमेंट्स के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कर दूं तो वो 1 ही आनी चाहिए. So it is also called the normalization of psi. Okay, so according to this, this is an important. If this condition hold, we say that the function psi is normalized. If it is not, then we will normalize this by multiplying a factor n0 that is called the normalization constant. अब हमने इस प्रोबेबिलिटी के इंटरप्रिटेशन से हमें ये भी पता चला कि जो हमारा फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर वैसा नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन वो डिफाइंड ही नहीं है. अगर उसका इंटीग्रेशन डिफाइंड ही नहीं है तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते. तो वो उस पार्टिकल को स्पेसिफाई ही नहीं कर सकता, तो वो वेव फंक्शन हो ही नहीं सकता. तो कोई भी वेव फंक्शन होगा वो सिंगल वैल्यूड भी होगा, कंटिन्यूस भी होगा. नाउ पोस्टुलेट 2. Postulate 2 is operator. The name of this postulate is 2 is operator. According to this, every observable in classical mechanics has a linear Hermitian operator in quantum mechanics. So what does it says? Like we have a observable x, that is position. इसके corresponding हमें एक operator मिलेगा x cap, such that x cap psi is equal to something xl. This is the position operator. Okay. Now, what is linear and what is Hermitian? Linear, you know that if any operator is linear, then let's say our operator is h cap, then I will operate it on psi 1 plus psi 2. Then what will I get? H psi 1 h psi 2. This is our linearity of the operator h. Now, what is Hermitian? It is an important property. Like in Hermitian, what we say that h psi is equal to psi. This is the Hermitian property. Integration of h psi star into psi is equal to psi star into x. If this holds, then this is equal to psi. Okay. So it is an important property. You must keep in mind what is an Hermitian operator. And all Hermitian operators they satisfy this property, and all operators that are defined from and observable in classical mechanics are Hermitian. This is an example of operator. Like operator of position is r cap, that is simply multiplication of r.
Like if I will operate of R, that will is equal to R. If will I operate the momentum operator, that is P cap psi, that is minus psi. Okay. Kinetic, these are some other operators: operator of kinetic energy, operator of potential energy, operator of total energy, operator of angular momentum. You can also say here that total energy operator can be written as kinetic energy operator plus potential energy. It is also called Hamiltonian operator. It is very useful in Schrodinger equation. Like our Schrodinger equation is, you know that this is our time independent Schrodinger equation. Now let's move on to our third postulate, that is measurement. In any measurement of the observable associated with operator A, the only value that will ever be observed are the eigenvalue A that satisfy the eigenvalue equation. If the system is an eigenstate of A with eigenvalue A, then any measurement of the quantity A always yield the value A. An arbitrary state can be expressed in a complex set of eigenvector of A. So what it is saying here, if an wave function psi is an eigenstate of a operators H or A, then we can write A psi is equal to A psi. Here, here A is the eigenvalue of the psi function for the operator A, and psi is also called the eigenstate of operator A. Also, uh, an arbitrary state can be expressed expanded in complete set of eigenvectors, that is a cap psi I is equal to ai psi I, summation of this ci. I made a mistake here. No. So according to this, if I have an function psi, that can be written as ci psi I, where psi I these are the eigenstate of vector A. Okay, where ci are constants. So the probability of the observing the eigenvalue ai by the for the operator A is equal to the square of the ci. That is, now let's move to our next postulate, that is postulate number 4, that is expectation value. Now we have any observable A, x x और y जो कुछ भी हो, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में वैल्यू निकाल सकते हैं हम उसके वेव फंक्शन साई को यूज करके. उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे दी जाती है? लाइक हमारे पास ऑब्जर्वेबल है ए, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी. Here one thing must be noted, that psi must be normalized. Okay, so using this we can find the expectation value of the observable A. Here, if okay, so let's see how. Since
जो हमारा साई है वो आइजन स्टेट है ए का, तो हम क्या, तो ये इक्वल टू है ए टाइम्स साई। That is equal to, because since our wave function size is normalized, so I can say that the value of this integral is equal to a. Now our next postulate is Schrodinger equation. According to this postulate, the time dependent Schrodinger equation can be written as h cap psi delta. Okay, this is our time dependent Schrodinger equation. Okay, where h cap is given by, this is kinetic energy operator, this is potential. Okay, so what can I say? I know this operator is also called an Hamiltonian operator, and the it is minus h square by 2m del square plus VRT. This is okay. Now, what are the solution of this Schrodinger equation? They are dependent upon the value of v. If our v is independent of time, then the solution of this equation can be written as psi of r comma t is equal to psi of r comma c. If our voltage is, our potential energy is independent of time, I am talking about that case. E by h t. Okay. So this is, if I know the value of our wave function psi at t is equal to 0, I can easily find the value of wave function at any particular time. That is given by this. So it is simple. So this is when, okay. Now हमने पांचों पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स से देख लिए. That our first is wave function, second is operator, third is measurement, fourth is expectation value, and fifth is Schrodinger equation. So हमने पांचों पोस्टुलेट देख लिया कि ये कहना क्या चाहते हैं, उनके मीनिंग क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या इक्वेशन यूज करते हैं, क्या क्या आता है. तो पांचों पोस्टुलेट्स आपने देखे होंगे, काफी सिंपल है, काफी बेसिक है, बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम इन्हीं का यूज करने, जैसे पोटेंशियल इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, एंड टनलिंग एंड एक्सेट्रा. इन सब में हम इन पोस्टुलेट्स का यूज करते हैं. तो पोस्टुलेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पे फोकस कीजिए अच्छे से. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब दी चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हिट द बेल आइकन.